अच्छा भी लेट्स स्टार्ट विद द अटेंडेंस इशू. Basically this time there will be no relaxation, no leniency for attendance whatsoever, and a person has to be there in the first 10 minutes for the attendance to be marked. Otherwise the attendance will not be marked, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे वो फिजिकल क्लास हो. तो अब हर हर मंथ में वेडनेसडे को ऑनलाइन क्लास होती है. तो भी कनेक्टिविटी का इशू जो है, वो माइक के चलने का इशू और दूसरे इश्यूज जो हैं, वो सारे के सारे आपको पहले से रिजॉल्व करके रखने हैं. ठीक है ना, आपको बताना है कि यू आर प्रेजेंट इन द क्लास, तभी आपकी प्रेजेंट लगेगी. और अब हर दफ़ा जो है वो इतने सारे लोगों का इशू हो सकता है, तो वो तो फिर अब एंटर करना पॉसिबल नहीं है. तो एक सुफियान आसिफ साहब हैं, ही इज़ वेरी वेरी एट द एज ऑफ अटेंडेंस. ठीक है ना, ये आप किसी वक्त भी ड्रॉप हो सकते हैं, कोर्स ड्रॉप हो सकता है. अब्दुल हादी हैं, महविश रहमान, हुरुल एन हरम, फिर आपके अहमद अवैस साहब हैं. इनकी भी अटेंडेंस काफ़ी शॉर्ट जा रही है. आपको सोचना चाहिए कि भाई वो किसी वक्त भी जो है वो शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस आप हो सकते हैं. खुदामा अहमद खान, सदफ अशफाक, मलिक अब्दुल सलाम, मोहम्मद ताहा सिद्दीकी, ये तो बिल्कुल ही जो है वो एज पे बैठे हुए. फिर आपके मोहम्मद उमर सिद्दीकी हैं, ये भी जो है वो अच्छे खासे शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हैं. और मोहम्मद उमर, फहद बिन नासिर, उरूज इलियास, माज प्रेजेंट सर, अहमद, प्रेजेंट। सलमान खान, फिर आपका शहसवाद दानियाल, वहाज असद. अच्छा, ये जिनके नाम मैंने बोले हैं ना, इनको थोड़ा सा देखना चाहिए, अपने अटेंडेंस का ख्याल रखें. किसी वक्त आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, तो इस वक्त इस दफ़ा लीनियंसी बिल्कुल भी नहीं है अटेंडेंस वाइज. ठीक है ना. तो अब मैं जरा उस पे आता हूँ, लेक्चर वो उसके अटेंडेंस लेने पे आ जाता हूँ. ठीक है ना. तो हम राउटिंग आज पढ़ेंगे इस वाले आज के कोर्स, वो आज के लेक्चर के अंदर. ठीक है ना. तो राउटिंग में हमने लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या किया था, कि हमने लास्ट लेक्चर में एक काम किया था. और वो ये था कि हमने वो डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम करके देख लिया था, और बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम करके देख लिया था. डाइक्स्ट्रा और बेलमैन फोर्ड वो एल्गोरिथम्स हैं जिनकी जिनके ऊपर बेस करके ये आगे पूरा का पूरा जो है वो क्या नाम है, ये प्रोटोकॉल्स बिल्ड किए गए. तो आपको आधी अंडरस्टैंडिंग उसकी हो चुकी है ऑलरेडी, और बाकी जो है वो अब हम आज इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. अच्छा, तो कमिंग टू द अटेंडेंस, सुफियान आसिम साहब हैं यहाँ पे? सुफियान आसिम, सुफियान आसिम साहब जवाब नहीं आ रहा, कोई आप हैं या नहीं है? सर वो उन्होंने चैट में बोला है। नहीं तो आप बोलेंगे ना, क्योंकि आपको माइक पे तो बोलना होता है, ऑनलाइन क्लास है ना. माइक नहीं है आपके पास? भाई ये आप अपना नहीं माइक का सर, इशू मेरे पास रिजॉल्व माइक। करिए, क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लास जो होती है वो उसका हर मंथ का उसका उसका मकसद ही ये होता है कि यू आर प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम फॉर एवरीथिंग. तो माइक का इशू आप नहीं है तो आप रिजॉल्व करके रखा करें. ठीक है. अब्दुल हादी, प्रेजेंट। इफ्राहिम यूसुफ, इफ्राहिम यूसुफ नहीं है, एब्सेंट है. अच्छा, तो मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान भी एब्सेंट है. अच्छा, कियान माजिद, प्रेजेंट। ठीक है. महविश रहमान, प्रेजेंट। हुरुल एन हरम, प्रेजेंट। राबीन आसिफ, राबीन आसिफ, राबीन आसिफ एब्सेंट है. मोहम्मद हसान अशरफ, प्रेजेंट। अनीशा राना, प्रेजेंट। अहमद अवैस, प्रेजेंट। खुदामा अहमद खान. प्रेजेंट। मेरी आवाज लैग कर रही है? अच्छा, नहीं सर। चलिए ठीक है, सबको बाकियों को क्लियर फील हो रही है? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है बिल्कुल. तो आप अपना थोड़ा देखिए, कनेक्शन का इशू होगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला नहीं है. अच्छा, खुदामा अहमद खान, खुदामा प्रेजेंट। प्रेजेंट। प्रेजेंट. सदफ अशफाक, सदफ अशफाक,
सदफ अशफाक सर उसका भी माइक नहीं चल रहा। माइक नहीं चल रहा डैडी, माइक नहीं चल रहा। प्रेजेंट। अच्छा, मलिक अब्दुल सलाम। मलिक अब्दुल सलाम एब्सेंट। अच्छा, मोहम्मद ताहा सिद्दीकी। सर प्रेजेंट। जुहेब अरशद नूर। जुहेब अरशद नूर एब्सेंट है। जुहेब अरशद नूर एब्सेंट। और मोहम्मद उमर सिद्दीकी। उमर सिद्दीकी एब्सेंट है। अच्छा, उमर सिद्दीकी इज एब्सेंट। जवादुल हसन प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है। मोहम्मद उरूज। प्रेजेंट सर। उस्मान हमीद। प्रेजेंट सर। उमर हुसैन। प्रेजेंट सर। मुस्तफ़ा जमान खान। प्रेजेंट। मोहम्मद जैन। प्रेजेंट। अच्छा, फातिमा इलियास। भाई माइक का इशू आप लोगों को रिजॉल्व करना चाहिए ना। अच्छा, फातिमा इलियास प्रेजेंट है। रिजवान भी प्रेजेंट है। अच्छा, मोहम्मद उमर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद आकिब। प्रेजेंट सर। मोहम्मद सुलेमान शरफ। प्रेजेंट। ईमन सिद्दीक। ईमन सिद्दीक अच्छा प्रेजेंट है। फहद बिन नासिर। प्रेजेंट। उरूज इलियास। अच्छा, मोहम्मद उमर कुरैशी। प्रेजेंट। उमर कुरैशी प्रेजेंट। अच्छा, माज अहमद। प्रेजेंट। मारिया खान। मारिया खान। अच्छा, इनका भी माइक का इशू है। भाई माइक का इशू सॉल्व करना चाहिए ना आप लोगों को। मारिया खान प्रेजेंट है। जवेरिया गुल। प्रेजेंट। अच्छा, सलमान खान प्रेजेंट। अच्छा, हमजा तनवीर। सर प्रेजेंट। शहसवार दानियाल। प्रेजेंट। अच्छा, मोहम्मद वहाज असद प्रेजेंट। आयशा अशफाक। अक्सा। अक्सा प्रेजेंट। प्रेजेंट है। अच्छा भाई, जो लोग एब्सेंट हैं वो ये हैं: उमर सिद्दीकी, जुहेब अरशद नूर, मलिक अब्दुल सर सलाम, जोएब भी आ गए, जोएब भी आ गए। अ, उमर सिद्दीकी, मलिक अब्दुल सलाम, राबीन आसिफ और इफ्राहिम यूसुफ, ये चार लोग एब्सेंट हैं। ठीक है। सर ये मैं जोहेब हूँ, मेरी प्रेजेंट लगा दें। हाँ, जुहेब तो लगा दिए। मलिक ने टैक्स में बोला है। अच्छा, ओके मलिक अब सर। आए। ठीक है, तो अभी अब सिर्फ उमर सिद्दीकी और अ, राबीन आसिफ और इफ्राहिम यूसुफ तीन लोग एब्सेंट हैं। अच्छा भाई, तो अटेंडेंस तो हो गई। अब स्क्रीन आपके साथ शेयर हुई हुई है। ठीक है। तो स्क्रीन शेयरिंग में मैं आपको दिखा दूंगा इस तरीके से कि हमारे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अच्छा, हम लोग जो है ना, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किया था वो बहुत फ्रूटफुल था। और उसके अंदर हमने ये काम कर लिया था कम से कम कि हमारे पास हमें डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम और बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम समझ में आ गया था, जिसकी बेस के ऊपर हमें आगे जो है वो इसको लेके चलना है। ठीक है ना। तो आगे का काम अब हमें करना है जो एक्चुअल नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होंगे। ठीक है ना। उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास देखें, बेसिकली पहले आप क्या करेंगे, आप एक नेटवर्क को ग्राफ के तौर पर ट्रीट करेंगे।
क्योंकि ग्राफ के ऊपर बड़े आराम से आप इसको मैप कर सकते हैं अपने नेटवर्क को, ठीक है ना। वो कैसे कर सकते हैं कि आपके पास ये बैकबोन इंटरनेट राउटर्स हैं, ठीक है, ये सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, थ्रू थ्रू सम लिंक्स। तो जो आपके पास राउटर्स होते हैं उनको आप जो है वो एज अ नोड कंसिडर करते हैं, और जो आपके पास लिंक्स होते हैं उनको एज एन एज कंसिडर करते हैं। तो आपके पास ये एक बेसिकली एक ग्राफ नेटवर्क बन जाता है, और उस ग्राफ नेटवर्क के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो हमने इंटरनेट स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़े थे पहले, और हमने इसकी राउटिंग टेबल वगैरह की चीज़ें भी हमने पढ़ी थी, और डिफरेंट चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके अंदर हमारे पास क्लासलेस राउटिंग, क्लासफुल राउटिंग, ऑटोनोमस सिस्टम, इंटर डोमेन राउटिंग, इंटर डोमेन राउटिंग पढ़ी थी। अब देखें, टू फाइंड द बेस्ट रूट द इंटरनेट कैन बी मॉडल्ड एज अ ग्राफ। द ग्राफ इज अ सेट ऑफ नोड्स एंड एजेस दैट कनेक्ट द नोड्स, ठीक है ना। टू मॉडल एन इंटरनेट एज अ ग्राफ वी कैन थिंक ऑफ ईच राउटर एज अ नोड एंड ईच नेटवर्क बिटवीन अ पेयर ऑफ राउटर्स एज एन एज, ठीक है ना। अब हम जो है वो क्या करेंगे, द इंटरनेट इज मॉडल्ड एज अ वेटेड ग्राफ इन विच ईच एज एसोसिएटेड इज एसोसिएटेड विद अ कॉस्ट, ठीक है ना। अच्छा भाई, ये अटेंडेंस जो है ना, आपको नेट नहीं चल रहा क्या, मतलब ये तो आपको पहले से ज्वाइन करना होता है ना, ये थोड़ी कि आप आइन वक्त पे जो है वो ज्वाइन करें उसके बाद कहें कि भाई अब उसको लगा दें। तो इस तरह तो मैं ये अटेंडेंस ही लगाता रहूंगा ना आपकी। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो था, हम जहाँ पे थे कि हमने इंटरनेट को एज अ ग्राफ ट्रीट किया था। तो हमने टू मॉडल इंटरनेट एज अ ग्राफ वी कैन थिंक ऑफ ईच राउटर एज अ नोड एंड ईच नेटवर्क बिटवीन द पेयर ऑफ राउटर्स एज एन एज, ठीक है ना। द इंटरनेट इज मॉडल्ड एज अ वेटेड ग्राफ इन विच ईच एज इज एसोसिएटेड विद अ कॉस्ट। अच्छा, आप देखिए, कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे पास यहाँ पे एसोसिएट हो जाती है। एक लिंक का होना जरूरी नहीं है कि दो लिंक्स बराबर हो। यानी कि अगर हम एक लिंक पे जाते हैं तो एक, जिस तरह रोड होती है हमारे पास, एक रोड जो है वो 3 रोज की होती है, 3-4 रोज की होती है, और एक रोड जो होती है सिंगल लेन होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप गलियों में से जाएंगे तो आप स्लो जाएंगे, अगर आप मेन हाईवे से जाएंगे तो आप फास्ट जाएंगे। इसी तरीके से डिफरेंट हमारे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है वो उसके अंदर एजेस के अंदर। तो अब इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर कोई लिंक हमारा जो है गीगाबिट्स पर सेकंड का होता है, और कोई हमारा किलोबिट्स पर सेकंड का होता है। तो जाहिर बात है, जो लिंक स्पीड जिसकी ज़्यादा होगी उसकी कॉस्ट कम होगी, और जिसकी लिंक स्पीड कम होगी उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। और इसको कॉस्ट को हम एज अ लिंक स्पीड भी देख सकते हैं, हम एज अ फंक्शन ऑफ डिले भी देख सकते हैं, और एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ लिंक्स भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो हम उसको जो है वो कॉस्ट कह देते हैं, ठीक है ना। तो कॉस्ट एक ऐसी चीज़ है जो यूज़र डिफाइंड होती है। यूज़र खुद डिफाइन करेगा कि मुझे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो कॉस्ट का फंक्शन वो खुद डिफाइन करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई एज नहीं होता हमारा किसी नोड्स के दरमियान में, वी कॉल इट इन्फिनिटी, द कॉस्ट बिकम्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। तो इंटरनेट एज अ ग्राफ हम देख रहे हैं, वी कैन सी इंटरनेट एज अ ग्राफ। वी हैव 7 नोड्स ओवर हेयर फ्रॉम ए टू जी। You can see that we have more than one options going from A to E. We can go through B, we can go through D, we can go through B, C, F, and then E. But the thing is that in this case there will be 4 links, and the cost, added cost, will be equal to more than than the other links, right? So we need to find the least cost path from any point to any other point in the network, right? So when the internet is modeled as a weighted graph, one of the ways to interpret the best route is to find the least cost route between source and destination among all possible routes. We need to find the least cost route between source and destination. So each router needs to find the least cost route between itself and all other routers to route a packet. ठीक है ना। हर नोड को अपने से दूसरे नोड्स के साथ लीस्ट कॉस्ट रूट मालूम करना होता है। For example, in this case, the best route between A and E is through B. 2 plus 4 is equal to 6. So if you go from through D, then it will be 8. If you go from
through C, B, C, and F, it will be 2 plus 5, 7 plus 4, 11 plus 2, 13. So this is the least cost path going from A to E. So in this case, the Bellman-Ford algorithm is used to find the least cost between source and destination. So we have various routing algorithms. One is distance vector routing, the other one is link state routing, and the third one is path vector routing. We are going to focus on the first two protocols. The difference is the way in which is in the way they interpret the least cost and the way they create the least cost tree for each node. राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर इम्प्लीमेंट वन ऑफ दीज एल्गोरिथम्स, यानी कि जो हमारे पास जो एल्गोरिथम्स हमने पढ़े थे उनमें से कोई एक एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करता है राउटिंग प्रोटोकॉल. तो वो एल्गोरिथम बेसिकली प्रोटोकॉल नहीं है. एल्गोरिथम इज नॉट अ प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल यूजेस एल्गोरिथम टू इम्प्लीमेंट द बेस्ट to implement the least cost routing. So, coming on to its diagram, the routing protocols are divided into two types: inter-domain routing and intra-domain routing. Intra-domain routing is a network in which we can know we can know we can know information about all other nodes that are in the network. While in inter-domain routing, we have to rely on the edge router or the gateway router, so to get to anywhere in the world. So border gateway protocol is used in that case. So we are going to focus on these two, right? So routing protocol is a combination of rules and procedures that lets routers inform each other of changes. तो हमारे पास क्या होता है कि हम एक तो ये होता है कि हम इनिशियल जब भी हमारा बनेगा तो हम उसको जो है वो जब भी इनिशियली हम काम करेंगे तो हम जो है वो एक अपना टोपोलॉजी बिल्ड करेंगे और उसकी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन all nodes will transfer their topology information to all other nodes in the network. Then sometimes it is important that we periodically update the information. We need to update the information periodically, because if we don't update periodically, then the latest news is not with everyone. ठीक है ना? We don't know whether there are some updates or not. अगर नहीं भी होगी अपडेट तो हम सेम पैकेट दोबारा से भेज देते हैं. And then the third one is that we whenever some link goes down or some node goes down, then we must also send an information said that there is a change in topology. So routing protocol is a combination of rules and procedures that lets routers inform each other of change. कोई लैंग्वेज होगी, कोई चीज होगी जिसके थ्रू हम जो है वो चेंज बताएंगे. Routing protocols are used to create and update routing tables. Each routing protocol is based on an algorithm. However, routing protocol is more than an algorithm where a protocol needs to define its domain of operation, the messages exchanged, and the communication between routers and interaction with the protocols in other domains. ठीक है ना? तो प्रोटोकॉल राउटिंग प्रोटोकॉल बेसिकली एल्गोरिथम को यूज करता है. राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद होती हैं. ठीक है? तो अब हमारे पास सबसे पहला वाला जो आता है दैट इज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग. अच्छा, इन द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग basically what we do is that we find the least cost route between any two nodes with a minimum distance. So each node maintains a table of minimum distance to every other node. Okay, the table at each node also guides the packets to the desired node by showing the next stop in the route. राउटिंग टेबल के अंदर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास किस डेस्टिनेशन पे जाना है, वहां तक का डिस्टेंस कितना है और किस नोड के थ्रू जाना है. Each node shares its routing table with its immediate neighbors periodically or whenever there is a change. And whenever there is a change. Once the tables are shared and updated, the tables are stable where each node knows how to reach any other node and the cost. Okay, once the tables are shared and updated, the tables are stable where each node knows how to reach any other node and the cost involved. Okay, I'm going to come back with a little bit of break. I'm coming back, okay?
So okay, so I am back. In distance vector routing, the least cost route between any two nodes is the route with minimum distance. Each node maintains a table of minimum distance to every node. The table at each node also guides the packets to the desired node by showing the next stop in the route, next hop routing. Each node shares its routing table with its immediate neighbors periodically or when there is a change. And once the tables are shared and updated, the tables are stable where each node knows how to reach any other node and the cost. Okay, so coming to the details, at the beginning the stable table does not exist, where each node can know only the distance between itself and its immediate neighbors, that is those directly connected to it. So for the moment, let's assume that each node can send a message to the immediate neighbors and find the distance between itself and these neighbors. Okay, so in the initial part, what we see is that every node can sense the distance between itself and its immediate neighbors, and from there we start our algorithm, right? The distance for any entry that is not a neighbor is marked as in unreachable, that is infinity. So in this case of distance vector routing, this is a sample graph consisting of 5 nodes, and we have these tables. So at A, what we see is that we can get to A with cost 0 because we are already at A, and we can get to B in cost 5 because there is a link with cost 5 attached with B. In C, we have we have a link that is with cost 2 attached to A, so we have cost 2 and next cost 2. In case of D, we have a link with cost 3. We can get to D with link cost 3. In case of E, we know that E is a node in our network, but we cannot get to E directly. So it is marked as infinity, right? So the next part is always blank over here because A is connected directly to the given node. Okay, A is directly connected with A, B, C, D, and A is not directly connected with E, so this is just blank, right? So in case of B, we have A has a cost of 5. We can get to A with cost of 5. We don't need to go through any other node. We can get to B with cost 0. We don't need to go through any other node. We can get to node C with cost 4. We don't need to go through any other node, we can go directly. We cannot get to D directly, right? And then E, we can get to E directly with cost 3 because there is a link directly connecting E with cost 3, right? So in case of C, we can get to A with cost 2. We don't need to go through any other link. We can get to B with cost 4. We don't need to go through any other link. We can get to C with cost 0 because it is already there. We don't need to go through any other link. We can get to D. We cannot get to D because it is not the immediate neighbor of C for the time being. Okay, for the first iteration. And we can get to E with cost 4 because there is a direct link. Similarly, in case of D, we can get to A with cost 3. We don't need to go through any other link. We can get to B with cost infinity. This means that we cannot get to B. We cannot get to C because it is not the neighbor. We cannot get to E because it is not the neighbor. So these are all infinity. We can get to D with cost 0 because this is the node itself. Similarly, E cannot get to A directly. It's not the neighbor. We can get to B with cost 3. We can get to C with cost 4. We cannot get to D, and we can get to E with cost 0 because we are at the same place. So now what happens that these all the nodes, they share their routing table with the other nodes. Which part of the routing table? Only the first 2 columns of the routing table are shared. Only the first 2 columns of the routing tables are shared,
with all the neighbors. So a node only shares only the first two columns of its routing table to the neighbor, to all the neighbors. And then updating takes 3 steps. There are 3 steps involved in updating the routing tables. Number one, the receiving node needs to add the cost between itself and the sending node to each value in the second column of the receive table. So whatever is received from its neighbor, we add the cost of the link going to that neighbor. Okay, we add cost of the link going to that neighbor, and then the receiving node needs to add the name of the sending node to each row as the third column. So if we are going to another node which is not my neighbor, if I can reach some other node, some node that is not my neighbor, I need to go through my I need to know whether if we can go from one node to another through, so for example, if I go from D to C, I need to record that I can get to C through A. Okay. So the receiving node needs to add the name of the sending node to the each row as the third column, right? So this is the path. Then the receiving node needs to compare each row of its old table with corresponding row or modified version of received table. The receiving node needs to compare each row of its old table with corresponding row of the modified version of the received table. So whatever we receive, we find we compare it with our old table. Oh, like over here, this is A's modified table. This is received from C. We modify it. We add the cost between A and C. We add the cost between A and C. That is +2 in every row. And then we compare with the A's old table. If the next node entry is different, the receiving node chooses the row with smaller cost. Okay. So if the value of next node entry is different, then the receiving table choose the row with the smaller cost. So over here you see that the cost overhead over here in old table was smaller. In the new table the cost is higher, getting to A. So we will choose this one. But in case of a tie, for example, in the third case, in case of a tie, the old value is kept. The old entry is kept, which means that we will not use this entry, we will use this entry. Okay. And the second condition, if next node entry is same. Now in this case, the next node entry is was different. If the next node entry is same, then what we do is that we receiving node chooses the new row. So if the next node this means that if the next node entry is same, that previously we were going through some of the node, and now we are going to the same node. So there is an update. This means that there is an update. This is important, especially if the path has 2 or more edges to it, right? We will see in the future, right? In the coming example. So what we see over here is that this is the table received from C. This is A's modified table. So A's modified table is based on this, and then we compare the modified table and old table. So in the first case, we choose the least cost. In the second case, we choose the least cost B5. In the third case, we choose the old version because it's a tie. In the fourth case, we use the least cost version. The least cost version, and least cost version is this one, and we keep it. In the fifth case, this is the least cost version, and this is the, so we choose this one. So we write E6C.
The only benefit in a short time, if there is no change in the network, each node reaches a stable condition in which the contents of its table remain the same. So if you see this, this graph, the farthest node from D is, this is A is 1 hop away, B and C are 2 hop away, and E is 3 hop away. 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. So in in 3 iterations, the information of E is going to come to D. So over here, the only benefit from updating of node A is the last entry. However, to reach, that is how to reach E in this case. Previously, node A did not know how to reach E. Now it knows how to reach E. Now it knows that the cost is 6 via C. Node to we can see go to E through C with cost 6. So it has A can go to E with through C. So it has to write in its routing table that its cost is 6, and it can go to C. So distance vector routing, we have A0. Now what we see is that we can get to A with 0 cost, we can get to B with 5 cost, we can get to C with 2 cost, we can get to D with 3 cost, we can get to E with 6 cost. So this is the final routing table, but in the middle of it, let's see how the other things are going to react, how other nodes are going to carry it forward. Let's see B. B can get to will get routing tables from all its neighbors. For example, in case of A, it will get updates from C, it will get updates from D, it will get updates from B. So if you see that in case of this one, this gets it in 0 cost, this gets in 3 cost, this gets in 2 cost, and this gets in 5 cost. 5 plus 5, 10. This is 2 plus 2, 4. This is 3 plus 3, 6. So this is going, it is going to keep the first entry. In the second one, it knows that it can go to B with link with cost 5. So B is going to say that I can get to A with cost 0, I can get to B with cost 0. So 0 plus 5, it is the same. In this case, in case of C, the cost is 4 getting to B. So 4 plus 2 will be equal to 6. Still, this one is the minimum cost. Okay. Let's compare with D. D can get to B in infinity. So it is already on the higher side. So we will keep the same entry. In case of C, B can get to C in cost 4. So 4 plus 5 is equal to 9. This is not smaller than the existing value. Over here, C can get to C with cost 0 plus 2. So it is the same entry. We will keep the old entry because there is no update. It's a tie. D cannot get to C, so we will keep this entry same. And then at D, for D, we can get in 0 plus 3, we already have 3. And C cannot get to D, B cannot get to D. So over here, the routing table will remain the same. Similarly, if we see that B is also going to get updates from all its neighbors, and it's going to update its routing table in a similar way by making modified routing tables, and then comparing all the modified routing tables with the old table. And when there is an update, it will use these rules to update the value. And then in a similar way, E will get updates from all its neighbors, D will get updates from all its neighbors, and then they will know after the second iteration that they can get to the nodes with path equal to 2.
And in the third iteration, they will further they will further share all the information with each other, and then the information will reach to the third level nodes. For example, E's information will reach D in this case. So when E's information will get to D, it will know that it can get to E in 9 in cost is equal to 9, because A is going to say that I can get to E in cost 6. So it will add 3 to it, and the cost will become equal to 9. And it will write in its sorting table that I can get to E through A. It can get to C and B through A. So